welcome back to my channel. Once again, this is me Deepika Sharma and I make beauty related contents on this channel. So if you are new to my channel, please take a moment and subscribe to my channel. मैं आपको हमेशा अपने हर मेकअप ट्यूटोरियल्स में बताया है कि स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप, वेदर इट इज़ अ मेकअप और वेदर इट इज़ नॉट अ मेकअप, दोनों वेज में ही स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो मेरी स्किन है, इट इज़ अ नेकेड स्किन। आई हैव जस्ट डन माई स्किन, नो मेकअप ऑन माई फेस, एंड जो भी आप देख रहे हो, दिस इज़ माई रियल स्किन, देयर इज़ नो फिल्टर इन दिस वीडियो। 2 years बैक दिस वॉज नॉट द कंडीशन ऑफ माई स्किन, but yes, after a very good regime and a lot of determination into my skincare, my skin is now much better comparatively. So yes, so that is the reason why I always recommend you guys also to follow a proper skincare routine. If you're thinking how to do a proper skincare, what are the steps, what we should do, which product we should use, so you may quickly go and check my previous videos wherein I have shown all the products and the different ways of taking proper skincare. Whatever I have told in those videos are those which I personally have been using. So yes, you can surely try that, because those steps or those skincare routines are the tested ones on me, which I personally follow. क्योंकि आज का tutorial is a glow Indian makeup tutorial wherein I'm going to show you कि आप कौन से ऐसे makeups कर सकते हैं during the winter seasons, which is ऑलरेडी गोइंग ऑन राइट नाउ। वेडिंग में बहुत ही ज़्यादा डांस वांस सब कुछ होता रहता है, बहुत मस्तियाँ चलती हैं। सो आई वुड पर्टिकुलरली वॉन्ट माई मेकअप टू बी हाइड्रेटेड, plus it has to be waterproof, and also it should stay long on my skin without chapping my skin or making my skin look fake. So I want something which should last for a longer period of time without dehydrating my skin. So to start with the makeup, first spray some mist. This is a refreshing mist from PLUM, एंड इसको हम डैप कर देंगे अपने स्किन पे। ये रिफ्रेशिंग मिस्ट मेरे स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा और बिल्कुल भी डल नहीं रखेगा। तो ये मैंने स्किन केयर के करने के बाद इसके ऊपर रिफ्रेशिंग मिस्ट डाला है, जो कि मेरे स्किन को प्लम्ड अप रखेगा और रिफ्रेश्ड रखेगा, हाइड्रेटेड रखेगा फॉर अ लॉन्गर period of time. Wait for a few seconds so that the mist gets well absorbed into the skin, and then we'll start with the further steps. 30 to 40 seconds are already over and I feel that the mist is now well absorbed into the skin, and now we'll move to the next step, which is going to be using a sunscreen. Now this is a mineral free sunscreen from the brand REQUIL, which is really amazing. It is anti-clogging, so it won't clog my skin as well. Also it will keep my face hydrated. This is a hydrating sunscreen, so sunscreen is also must. अगर आप डे टाइम के वेडिंग अटेंड कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर का स्किन जो है वो यूवी रेज से इफेक्टेड ना हो। आई नो कि काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो विद फिल्टर आते हैं, विद यूवी फिल्टर्स आते हैं, दैट इज़ जस्ट नॉट इनफ, सो यू एक्चुअली नीड टू पुट अ गुड सनस्क्रीन। सो सिंस माई स्किन इज़ एन एक्ने प्रोन स्किन, तो मुझे काफ़ी पिंपल्स हो जाते हैं, एंड यू कैन सी कि करेंटली भी मेरे चेहरे पे एक्टिव पिंपल इज़ देयर, 1, 2 and 3, ये 3 जगह पे मुझे एक्टिव पिंपल है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज गो फॉर अ कॉमोडोजेनिक सनस्क्रीन, जो कि आपके स्किन को बिल्कुल भी आपकी स्किन को क्लॉग नहीं करेगा, एंड दिस इज़ वेरी मच गुड फॉर एन एक्ने प्रोन प्लस ऑयली स्किन टाइप या फिर कॉम्बिनेशन स्किन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पेशेंस while doing a makeup, because if you want to achieve a long lasting, waterproof and a very effective and a mind blowing makeup, then you have to make sure that you keep lot of patience with you. You have to give time to that product so that it gets well absorbed into your skin, and then you should move on to the next step. Otherwise क्या होगा, आप सारे जो भी आप प्रोडक्ट्स लगाते रहोगे बैक टू बैक, then it would be the worst part. It would result into chapping of your skin, melting of your makeup. आपके मेकअप में wrinkles, cracks आने लगेंगे, and it won't last for a longer period of time. थोड़ा देर और वेट करेंगे ताकि सनस्क्रीन जो है वो भी मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। 30 to 40 सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड नाउ मेरा सनस्क्रीन जो है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है मेरे स्किन पे। वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आई विल बी फर्स्ट यूजिंग माई लिप बाम, बिकॉज मैंने अपने लिप्स में बाम तो लगाया है, बट स्टिल आई फील दैट आई शुड पुट लिटिल मोर। आई एम गोइंग टू पुट लोट्स ऑफ lip balm. So we'll start up with the makeup part. So this is the primer from Maybelline Fit Me. So ये primer जो है, this is for the oily skin type. So I'm going to use this much, and I'm going to just apply it वहाँ जहाँ मुझे इसका requirement है, where I have got open pores. So you can see over here. Now we'll wait for a few seconds so that the primer also gets absorbed into the skin, थोड़ा set हो जाएगा, and then we'll go to the next step, which is using of a concealer. So here I'm going to use this concealer from Inside Pro. This is a wheel. पहले green वाला जो shade है वो लूँगी यहाँ पे, and then I'll apply it on this active pimple of mine to hide the pink shade of this. I will blend it with my fingers and a bit over here.
I'm gonna use this orange concealer over this part. ये जो है थोड़ा blemish है, तो थोड़ा dark shade है, तो I'm just gonna apply this. I've used very less product. यहाँ पे थोड़ा pigmentation ज़्यादा है. The corner of my lips as well. जहाँ जहाँ मुझे थोड़े थोड़े हल्के हल्के से पैचेस है, वहाँ पे I'm gonna use my Maybelline Fit Me Age Rewind. This is in the shade Caramel. I'm going to use this concealer on the acne spots. Using my finger, I'm just going to blend it again. नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही वो स्टेप है जो हमारे फेस को, हमारे मेकअप के बेस को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाएगा. सो क्योंकि ये विंटर्स टाइम है, ऊपर से विंटर में वेडिंग है, तो हु वुड नॉट लव टू हैव दैट ग्लोइंग बेस. सो हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट ग्लोइंग बेस, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज माय फाउंडेशन which is from Maybelline Fit Me. I've taken 3 pumps. To achieve that glowy base, I'm going to mix this wonderful strobe cream which is from NYKAA, and इसका शेड एंड ऑल मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डालूंगी. तो थोड़ा मैं इससे ज़्यादा सा लूँगी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली मिक्स इट विद माई फिंगर. यहाँ पे मैं अपने फिंगर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ. मिक्सिंग दी प्रोडक्ट यूजिंग योर फिंगर्स वार्मनेस गिव्स इट अ वेरी नाइस ब्लेंड, एंड बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है, एक दूसरे से ब्लेंड हो जाता है, एंड यू विल सी दैट रियली गुड इफेक्ट. I'm going to take my buffing brush. I'm just going to do dab all across my face. मैंने अपने आईज के नीचे कुछ नहीं लगाया. रिमेनिंग प्रोडक्ट है, उसी को मैं बिल्ड करते हुए अच्छे से अपने आईज के नीचे तक लेके जाऊंगी. जो भी मेरे आईज के नीचे जो भी हल्का सा जो ब्लैकीनेस है, ब्लेमिश है, वो जो है वो हाइड हो जाएगा बाय दिस. एंड देन इसके ऊपर मैं कंसीलर लगाऊंगी विच विल गिव मी अ गुड कवरेज. दैट इज़ द रीजन वाई आई अवॉइडेड दैट. नीड टू ब्लेंड दिस मोर फॉर सम टाइम. मैंने काफ़ी डीप नेक डाला है. आई एम वेयरिंग अ साड़ी, सो आई डोंट वांट कि माय नेक शुड लुक डिफरेंट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ऑल्सो ऑन माई नेक. ये हालांकि अभी थोड़ा ब्राइटर दिख रहा है मेरे स्किन पे, बट ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा. ओके, एंड देन वंस इट विल गेट सेट ऑन टू माई स्किन, देन इट विल जस्ट लुक द सेम. इतने अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है स्किन. आई यूज दी मैट प्रोडक्ट इवन ड्यूरिंग द विंटर्स, बिकॉज इफ आई यूज अ क्रीम प्रोडक्ट देन इट विल डेफिनेटली ruin माई होल मेकअप. बिकॉज थोड़ी देर के बाद जब मेरा स्किन सेबम सिक्रेट करने लगेगा, ऑयल सिक्रेट करना लगेगा, तो उसके बाद मेरा मेकअप जो है वो मेल्ट होने लगेगा. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने मैट प्रोडक्ट यूज़ किया है यहाँ पे, ओनली द फाउंडेशन पार्ट. बट मैंने स्किन केयर ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरा स्किन अगेन मैट प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से कोई ज़्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं होगा. सो माई स्किन विल ऑल्सो बी हाइड्रेटेड. दैट इज़ द रीज़न मैंने मिस्ट स्टार्टिंग में इसीलिए लगाया था. Maybelline Instant Rewind. This is in the shade medium, and I'm just going to highlight it on the corner of my eyes here, on the bridge of my nose, chin pe, then over here, and थोड़ा सा मैं अपने cupid पे करूँगी, and on the center of my forehead. Now leaving my eyes part, rest of the area I'm just going to blend it. क्योंकि ये सब ब्लेंडिंग हो चुका है, सो नाउ इट्स टाइम कि मैं अपने अंडर आइज पे भी इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूँ. आई हैव नॉट यूज एनी कंसीलर्स इवन ऑन टॉप ऑफ माई आईज, तो वो आगे दिखाऊंगी कि क्यों नहीं किया एंड ऑल दैट. ओके, सो या मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, द contouring part. So I am going to use the same wheel for contouring. So here they have a darker shade, so I'm just going to use that. I'm just going to do some contouring on the bridge of my nose. हल्का सा मैंने यहाँ पे लिया. I'm going to use my Crevlin का TL powder. यहाँ जहाँ concealer लगाया है, I'm just going to quickly set it with the powder. We'll go to the blush part. So here I'm going to use my MAMAEARTH lipstick, which is in the shade Plum Punch. I'll just take it on my fingers, and then I'll use it on the cheeks. So I'm just using my fingers to do the blending part. जो बचा है उसे अगेन सेंटर ऑफ द नोज. वेडिंग का टाइम है, सो आई डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, सो आई विल बी सेटिंग दिस विद अनदर ब्लश विच विल ऑल्सो बी ऑफ द सेम शेड. टेक अ पाउडर ब्रश विच इज फ्रॉम स्टे क्वर्की. दो इट इज़ विंटर, सो विंटर्स में पाउडर प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, बट आई एम जस्ट गोइंग टू लॉक इट अप. आई एम गोइंग टू टेक वेरी लेस प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रीम का लगाया है नीचे प्रोडक्ट, सो मैं बस उसे क्विकली लॉक करूँगी यूजिंग दिस शेड. टेक सम डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा, एंड नाउ मैं इसे लॉक कर दूँगी. तो फिक्सर से इसे सेट करेंगे. फ्रॉम द ब्रांड फेसेस कैनेडा. वी शुड नॉट टॉक मच.
गो टू द आईब्राउज पार्ट। तब तक हम अपने आईब्राउज को सेट करेंगे। स्पूली लेके हम पहले से अच्छे से यूज करेंगे। ब्राउ फिलर विच इज फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन एंड दिस इज वन विच जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड विच इज़ गुड। जहाँ जहाँ गैप्स है मैं बस वहीं फिल करूँगी। do the locking part again because ये cream product था. So now I will just lock this using my eyeshadow which is gonna be this brown का shade because मैं black यहाँ पे use करूँगी तो it will look very fake, very artificial. So I'm just going to mix this with black a bit and then I'm just going to lock it up. This brow turned out to be so beautiful. So now I will quickly do this side of my brows off the camera. My both brows are done and now we'll go to the next step which is my favorite step which is my eyes. So I'm just going to do थोड़ा वेडिंग टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे आईज जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ऐसा लग रहा है कि शैडो लगा रखा है यहाँ पे। दैट इज द रीजन व्हाई आई डिड नॉट स्किन करेक्ट ओवर माय आईज। सो यू कैन सी दैट नेचुरल सा। हम इसे और थोड़ा एनहांस करेंगे यूजिंग दिस शेड फ्रॉम माय हुडा रोज गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट। इट हैज गॉट रियली वंडरफुल शेड, दिस सैंडलवुड शेड आई एम गोइंग टू यूज एज माय ऑन माय क्रीज लाइन एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट मिक्स इट अप यूजिंग दिस। क्योंकि ये वेडिंग सीजन है तो मुझे अपने आईज में थोड़ा शिमर चाहिए। सो आई विल बी यूजिंग दिस शैम्पेन शेड विच इज इन द नेम बबली इन दिस पैलेट। तो ये काफी अर्दी शेड है और ये मेरे स्किन टोन पे बहुत अमेजिंगली स्टैंड आउट करता है एंड वेडिंग सीजन में अर्दी आई से ज़्यादा बेटर और क्या ही लग सकता है। How well I have placed it over here. अपने आउटर क्रीज पे इसको ब्लेंड करूंगी और जो भी बचा कुचा प्रोडक्ट है उसे अपने इनर क्रीज पे लेके आऊंगी। Second shade which I'm going to use from the same palette is going to be this shade. So this is a bit of a darker pinkish shade, थोड़ा सा plum shade का है। तो हुडा पैलेट में इस शेड का नाम है मैनीटर। मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। Now I'm going to take the first shade again which is the brown shade on my brush. पिंक कलर मैंने लगाया, उसी के ऊपर इस कलर को प्लेस करते हुए मैं ब्लेंड करना शुरू करूंगी फ्रॉम द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज। You can see that shade on my eyes which is just looking so beautiful. Again I'm going to do the same thing on the other side. Take the same crease वाला कलर again। वापस से मैं इसे एक बार रिवर्स में ना अपनी क्रीज के ऊपर वापस से लगा दूंगी like this। मेरा जो ट्रांजिशन शेड है वो कितने अच्छे से और उभर के दिख रहा है। This is what I wanted and now we'll go to the next step using the champagne shade and मैं इसे अपने स्मॉल फिंगर पे ऐसे करके लूँगी, इसे अपने इनर कॉर्नर्स पे इसे लगाऊंगी और इसे ना खींच खींच के सेंटर ऑफ माई आईज तक ऐसे ऐसे लेके आऊंगी लाइक दिस। व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस विद योर हैंड, फिर इससे ज़्यादा आप अपनी क्रीज लाइन तक ना लेके जाओ। हाउ नाइसली दिस कलर इज स्टैंडिंग आउट है ना। इस पर आप सीधा डायरेक्ट मस्कारा भी लगा सकते हो विद अ काजल, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट मस्कारा नहीं लगाऊंगी। आई एम गोइंग टू अप्लाई काजल पेंसिल एंड मैं इसे अपने आई के ऊपर लगाऊंगी हल्का सा। आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट आउट। I will be locking this again with the black shade from the same eyeshadow palette। इस कलर के ऊपर इसे लॉक कर दूंगी ताकि ये कलर जो है बाहर स्प्रेड आउट ना हो। इसी ब्रश से मैं अपने इनर कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे करूँगी। आई एम गोइंग टू यूज सेम काजल पेंसिल ऑन दी वाटर लाइन। हाँ, ब्लेंडिंग जो है वे क्विकली करना है। लॉक दिस शेड एज वेल। इसे और अच्छे से लॉक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ स्मॉल ब्रश सैंडलवुड शेड फ्रॉम दिस पैलेट एंड नाउ मैं इसे अपने बिलो द वाटर लाइन इसे ऐसे लगाऊंगी। यूजिंग अ लैश कर्लर। सी दैट ये लैश कितने अच्छे से कर्ल हो चुका है ना। दिस इज कैनेडाज मैग्नेट आईज मस्कारा विच इज रियली अमेजिंग। दिस इज नॉट अ वाटरप्रूफ मस्कारा बट आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस। आई डू नॉट वांट टू यूज एनी आर्टिफिशियल आई लैश, सो नो फेक लैशेस। आई एम जस्ट गोइंग टू बी वेरी नेचुरल विद माई लैश टुडे। इतने देर पार्टीज में हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाता है फॉर मी पर्सनली, सो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दीज यू नो आर्टिफिशियल। अच्छे से ये लैश जो है अच्छे से कवर हो चुका है एंड नाउ द लोअर लैश। एडिशनल स्टेप विच वी आर गोइंग टू ऐड इन दिस मेकअप इज कि अभी मैंने एक नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टॉप इट अप यूजिंग अ वाटरप्रूफ मस्कारा। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इन कलर एंड अमेजिंग, अच्छा ब्रांड है। तो क्योंकि ये वेडिंग सीजन है एंड यू नो वेडिंग के टाइम पे ना काफ़ी डांस वांस होता है एंड क्योंकि विंटर्स भी है, ग्लोई मेकअप भी चाहिए, ऑल दैट थिंग कीपिंग इन माइंड। तो आई डोंट वांट कि डांस करते वक्त इतना स्वेटिंग हो कि फिर मेरा मस्कारा ही
मेल्ट होना शुरू हो जाए, which is going to be really a disaster. So I'm just going to make this waterproof. Quickly I'll do this eye off the camera. So finally both of my eyes are well done. Here I'm going to use the same shade from Huda palette, which is in the brown shade, which I use on my crease line. And now I'm going to just contouring over the corners of my forehead like this. The eyes ka makeup is well done, and you can see how beautiful they turn out to be. It looks very Indian. To give that more Indian vibe, I use the kajal today. Go to the lips part. So now here I am going to use my Wet and Wild chestnut lip pencil, जो अभी recently मैंने NYKAA Pink Friday sale से खरीदा है. वैसे ज़रूरी नहीं है लिप पेंसिल यूज़ करना, बट यूजिंग दिस लिप पेंसिल बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लिपस्टिक है वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहे. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ अ लिक्विड लिपस्टिक, आई एम गोइंग टू यूज़ अ क्रीम लिपस्टिक, बट टू मेक श्योर दैट इट लास्ट लॉन्ग, सो आई एम गोइंग टू यूज़ द लिप पेंसिल फर्स्ट. आई एम गोइंग टू जस्ट फिल इन माई लिप्स यूजिंग द सेम लिप पेंसिल. कलर भी कितना अच्छा लग रहा है मेरी स्किन टोन पे. जो मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया था लिपस्टिक, द सेम लिपस्टिक आई एम गोइंग टू यूज़. दिस इज फ्रॉम MAMAEARTH in the shade Plum Punch. Use my finger to just smudge it up. How gorgeous this lip color turned out to be. So we created this shade using these two things. One is the lip pencil, which is of a different shade, and one is the lipstick, which is again of a second color. And then we mixed these two colors and we got this three colors. And this is what I love doing with this, and probably that is the reason why this is one of my favorite lip pencils. Now you can see how gorgeous this turned out to be, है ना. And this lipstick is also amazing, guys. अगर आप चाहते हो कि आपका lips dehydrated ना हो, हमेशा hydrated रहे, and so you can definitely go with this one, and still you want that matte look, so you can go with. Winters हैं तो winter के लिए liquid lip color use करना I don't think so would be a good option, because liquid lipsticks tend to chap your lips by making it more dehydrated. We use the same Huda Beauty palette. Use this bubbly shade, which is a champagne shade from the just blend it out. Look at this part, which is already highlighted, and look at this part, which is not highlighted. My inner corners. How well this particular eyes got highlighted, isn't that? मेरे जो blush part है वो already highlighted है just because of that illuminator, but still I will just highlight it a bit more using the same shade. With this we are done with today's glowy Indian wedding guest makeup, and now it's time to quickly go and put on the jewelry. And this is the final look of today's video. I'm wearing a sari, तो साड़ी को बिंदी बहुत अच्छी लगती है. Complete makeup look for today's video. I hope you guys like the video. If you have not subscribed my channel till now, then make sure you do subscribe my channel right now. And also अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें with the same passionate people like us. And also don't forget to hit the bell button so that you do not miss out any of my videos related to makeup, skincare and fashion. Details of all the products used in today's makeup tutorial is mentioned in the description box. If you still have any doubts, you can definitely comment it in the comment section, and very soon I will be coming up with more such makeup tutorials. I hope you liked it. This is a very simple, beginner friendly makeup, and once you are into the practice of makeup तो आपका makeup बहुत ही easily जल्दी से हो सकता है. And right now you can see कि makeup जो है बहुत अच्छे से मेरे चेहरे पे set हो चुका है. And yeah, so this is the final look, and I hope you guys liked it. Me, Deepika Sharma, signing off for today's video. Have a beautiful day ahead. Love you all. Bye bye. And also do not forget to subscribe this channel. Bye.